Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna. सब गाइए. Ritika Mataji, Neha Mataji, Sakshi Mataji, and others. Okay, yeah. So I will continue from the point from where Nitish Prabhu has finished in the last class of time management. So can anyone just recall where have we stopped for time management in the last session? Yes. हम लोग कहाँ पर स्टॉप हुए थे टाइम मैनेजमेंट में लास्ट सेशन में? मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप सब लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे? इज इट? यस. ऑनलाइन डिवोटीज, अदर्स, मेरा स्क्रीन दिख रहा है राइट? ओके, तो यहाँ तक हुआ था क्या? निशांत प्रभु, सूरज प्रभु, आप लोग क्लास में थे राइट? क्वाड्रेंट्स हुआ था, टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट का इंट्रोडक्शन हो गया था राइट? क्वाड्रेंट 1 quadrant of action, quadrant 2 quadrant of quality, quadrant 3 quadrant of deception, and quadrant of waste, quadrant 4, है ना? quadrant of quality. आप लोग दो लोग एक साथ बैठ सकते हैं ताकि. हरे कृष्णा. आपके दोस्त? ओके, तो निशांत आप इनको शेयर कर सकते हैं लिंक. ओके, क्लास का लिंक. सो you can see from the phone slides देख सकते हैं. तो quadrants का introduction last time दिया था right time management में. So can anyone tell which is the best quadrant of all of these quadrants? Quadrant 2. तो quadrant 3 और 4 के साथ क्या करना चाहिए? उसको eliminate करना चाहिए. ठीक है. So generally अगर देखा जाएगा तो quadrant 1 is the quadrant of passion. Okay, people who come under this quadrant will be in lot of passion. Yes, आप लोग सब लोग notes बनाइएगा because today I'll be discussing some very important points in time management. It will be helping you in your studies, in your working life, all those things. ठीक है, so please make some notes. Okay, so quadrant 1 is quadrant of passion, and quadrant 2 is a mixture of passion and goodness. Okay, mostly goodness. So we should be always in quadrant 2 and quadrant 1. Both हम लोग को मतलब एक combination होना चाहिए. उसे बोलते हैं जैसे in the olden days the kings were called as Raj Rishi. Raj Rishi बोला जाता kings को. Raj मतलब राजा and Rishi. Rishi is guiding that king. So generally जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं they are in mode of goodness. And king is in mode of passion. He is Kshatriya. He has to fight. He has to protect his citizens. And the rishi log जो रहते हैं, ऋषि मुनि लोग, वो लोग क्या करते हैं? They are in mode of goodness. They will read scriptures. They will do some meditation. All those things. So when a passion is controlled by goodness, then the energy will be flown to a right direction. Okay, passion को direction मिलता है. So same way with all of us. Now we are young. They're in our 20s now. All of us. We have a lot of energy. Passion है. ये करके दिखाएंगे, वो करेंगे. All those things we have decided. But अगर ये passion को direction नहीं देंगे, then everything is lost. So that is what is happening here in voice. हमारा जो passion है, हमारा जो career है, उससे guidance दिया जा रहा है by scriptures. Okay. ये training गुरुकुल में दिया जाता था. In the olden days, Gurukul system, like first 25 years Gurukul training, the next 25 years he'll be in a married life, and then next 25 years will be Vanaprastha, and then last 25 years of his life will be sannyasi. Okay, so ये training वहाँ पर दिया जाता था in that system. So online devotees, आप लोग मुझे सुन पा रहे? Just now someone has joined. Okay, आप आशीष आप है right? Okay.
Kritika Mataji's recording. So this is the training we used to be given. Okay. So now coming to the next slide, आप देख सकते हैं time waster जैसे मैंने बोला था, right? Quadrant 3 and quadrant 4. These are the quadrants of time wasters who are in mode of ignorance. Okay. Like see, can someone read? Nishant, can you read the first point? What is there? Time wasters. Never setting goals or setting goals and not sticking to them. हाँ, बहुत सारे गोल्स बना के रखेंगे पर गोल्स को पूरा नहीं करेंगे, ऐसे पेजेस में लिखे हुए रहेंगे, कर नहीं पाएंगे. मूविंग अराउंड एंड सोशलाइजिंग टू मच, बहुत लोगों से दोस्ती बनाना. अभी कॉलेज के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग घूमते रहते हैं, सोशलाइज करते रहते हैं. कॉलेज खत्म हो गया कुछ टाइम के बाद, पर घर आते 2 घंटे के बाद. So all these things, low level of concentration, getting easily distracted by trivial things, then trying to do more than one thing at a time. It is not possible. एक थिंग करो, फोकस पे करो, उसको अच्छे से करो. प्रोपा जी बोल रहे थे अगर मैं 1 गिलास पानी पी रहा हूँ तो मेरा ध्यान उसी में है. ऐसा नहीं कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे कोडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे मोबाइल में कुछ कर रहा हूँ. नॉट लाइक दैट. फोकस नहीं रहेगा. तो एक चीज को अच्छे से करो. ओके. Making too many personal phone calls regularly, not doing the most important work during peak energy hours of our day. That is what we are doing, right? Energy hours is जब सूर्य का उदय होता है और तभी हमारा बॉडी का एनर्जी बढ़ता है. And as the sun sets, our energy also goes down. But what we do, अगर आप IT कंपनीज में आएंगे, after 6 work will start. 6 बजे के बाद शाम को, in the mode of ignorance and passion. Passion के बाद ignorance आएगा. सुबह सब लोग लेट से आएंगे, कभी कभी 10 बजे 11 बजे आएंगे, टाइम पास करेंगे, कैफेटेरिया में घूमेंगे, सब कुछ करेंगे. देन द मैनेजर विल, अब जब निकलने का समय तो मैनेजर एक ईमेल ड्रॉप करेगा, ओके अभी आपको एक काम करना है. वरुण प्रभु जो है वहां पर उनके बैंक में 9 बजे तक काम कर रहे थे, उनका बैंक मैनेजर 9 o'clock तक सब लोग वहां पर रुकते हैं. सेम इन IT कंपनीज ऑल्सो. 6 o'clock सब लोग का एनर्जी आता है, काम करेंगे, एंड देन फ्राइडे नाइट दे गो टू pubs and all, work hard and enjoy harder. हमारे ऑफिस के बाहर एक बोर्ड में लिखा है, बहुत बड़ा बोर्ड, work hard, enjoy harder. So this is what is not good thing, time wasters. So these are all the activities. You can make a note of it or take some screenshots if you want. This will be helping you. Time wasters. These things we should not do in our life. Okay. Again, see next slide. Also, there are some other more activities in time wasters. So आप लोग इसका screenshot ले सकते हैं. You can go in detail because this session is little big. So I have to quickly go through all the points. Okay. Then देखिए, clearly it is mentioned here. Focus on quadrant 2 in organizing things, tasks and people. Putting first things first. Okay. And then there is some generation of time management जो आज हम discuss करेंगे. Time management के 4 generations क्या है? Okay, very interesting. This we'll discuss, and next 2 topics will I'll try to cover today as much as I can. So first things first. So यहाँ पर कुछ time management techniques है. These things will be taught to you. But before that, I will tell you one small story over here. This one, okay. So देखिए क्या हुआ था. आई थिंक सम ऑफ यू माइट नो इट, जिन्होंने पहले भी मैंने स्टोरी बोला था बहुत पहले एक सेशन में. तो हाँ, सो एक क्लासरूम में टीचर केम. ओके, ही केम विद अ जार. एक जार लाया एंड ही ब्रॉट 4 थिंग्स. ही ब्रॉट सम स्टोन्स. ओके, देन ही ब्रॉट सम पेबल्स, जो स्मॉल स्टोन्स पेबल्स जिसे बोलते हैं. देन ही ब्रॉट सम सैंड एंड ही ब्रॉट सम वाटर. नाउ ही टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट you have to ये exactly measure करके लाया हूँ कि आप उसको अगर इस जार में डालेंगे एक particular order में, sequence में, तो जार से वो overflow नहीं होगा, तो सब एक साथ जार में हो जाएगा. तो उसने पहले स्टूडेंट को बुलाया, मतलब he asked who can do it. Some of them raised their hands. He called the first student. तो स्टूडेंट आया, he put the water, then he put the sand, then he put some small stones, then he put some big stones and the water came out. Overflow हो गया जार से. Then he got second students. उन्होंने कुछ और ऑर्डर में किया. All the students got, most of them got failed. And finally, the teacher did it. So, can anyone of you guess what will be the sequence?
जिन्होंने पहले सुना है वो मत बोलिएगा, ठीक है? एनीवन गेस ले सकते हैं? बताया था क्या ये? बताया था सब लोगों को? ओके ओके, सो सीक्वेंस क्या है फिर? और बता सकते हैं? ओके ओके, सो व्हाट डज दिस थिंग, ये क्या मतलब हमें ये करता है? व्हाट डज दिस थिंग टेल अस? क्या बोला था लास्ट सेशन में दिस लोगों ने? So generally what we are doing it is we are prioritizing our tasks, our work. That is the main thing which comes from this example that teacher wanted to tell to all the students. Okay, to this example. Okay, so now we'll go into the fourth generation of time management. Okay, so first generation. Okay, so first generation, can someone read this? Anyone? कोई पढ़ सकते हैं, देखिए आपके फोन में स्लाइड में. Keep track of things you want to do with your time. Write your report, attend the meeting, fix the car, clean out the garbage, etc. Read करो. Characterized by simple notes and checklists. If tasks are not accomplished, put them on your list for tomorrow. There is a recognition and inclusiveness to many demands and place on your time and energy. Okay, so what does this mean? Make a to-do list. Generally, this is anybody can do it, right? First generation time management. जैसे देखते हैं हम लोग, हमारे घर में भी कभी कोई प्रोग्राम होता है तो क्या टू लिस्ट बना देते हैं, राइट? मुझे ये सब चीजें करनी है, ऑल दिस थिंग वी डू एंड जस्ट वी, जैसे जैसे होता है आज ये 3-4 टास्क मुझे करना है. इवन ए इलिटरेट मैन कैन डू दिस थिंग्स, है ना? So this is the first generation time management. Very simple. Anyone can do. Now coming to second generation time management. Okay. Someone else can read this. Characterized by simple notes and checklists. Second generation. Screen पे देखिए. Slide change नहीं हो रहा है क्या? I'll again reshare it 1 minute. Those who are online, आप लोग देख पा रहे मेरा स्क्रीन? इज इट? आशुतोष, राज, प्रभु, अदर्स? नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रहा अभी स्क्रीन. ओके, नाउ? या नाउ इट इज विजिबल. ओके, नाउ इट इज विजिबल. ठीक है. सो यस, वो आप रीड कर सकते हैं सेकंड जनरेशन टाइम मैनेजमेंट. Planning and preparation, characterized by calendars. Okay, Prabhuji, I thought you asked me to read, so I'm reading. Okay, you can continue. Should I? Okay, yes. Okay, Prabhuji. Planning and preparation, characterized by calendars and appointment books. Goal setting, planning ahead and scheduling future activities and events. Make appointments, write down commitments, identify deadlines. Reflects an attempt to look ahead to schedule events and activities in the future. Correct. So this is a next step. Now, first generation time management, second generation time management में क्या है कि देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारा एक्टिविटीज आ गया, ठीक है? Now एक्टिविटी को क्या करेंगे? We'll plan कि मैं पहले ये एक्टिविटी करूँगा, इसके बाद करूँगा, आप एक शेड्यूल बनाएंगे. आप everybody is able to understand, right? कि राजकुमार प्रभु इंग्लिश समझ में आ रहा है कि? ओके. तो हम लोग क्या इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक शेड्यूल बनाएंगे कि मुझे इस टाइम में ये चीज करना है, इतना सारा एक्टिविटीज है, उसका ये टाइम में मुझे कंप्लीट करना है, एक डेडलाइन सेट करेंगे. ओके, ये सेकंड जनरेशन हो गया, ठीक है? और उसके हिसाब से हम लोग उसको करेंगे. तो ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में डिफरेंस क्या है, कौन बता पाएगा? फर्स्ट जनरेशन टाइम मैनेजमेंट ने आपको बोला बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है, इसमें हम लोग डेडलाइन मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे. ओके. प्लानिंग और प्रिपरेशन. ओके, एनीवन एल्स वांट टू टेक अ गेस? देयर इज अ प्रायोरिटाइजेशन. प्रायोरिटी तो किया नहीं अभी तक. टेक्नोलॉजी तो पहले वाले में भी है. टू डू लिस्ट, यू कैन यूज अ फोन.
ओके सी मेजर डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट जनरेशन टाइम मैनेजमेंट देयर इज नो प्लानिंग. आपने बस चेकलिस्ट बना लिया, ये 10 एक्टिविटी करनी है, आप बस करते जा रहे हो, कुछ प्लान नहीं है, करना है आप कर रहे हैं. सेकंड जनरेशन में प्लान है कि ओके मुझे एक शेड्यूल, मैंने शेड्यूल बनाया है कि ठीक है मैंने अभी मेरा समझिए आज 6 o'clock में सेशन देना है. ओके ये मेरा शेड्यूल, तो ये टाइम 1.5 hours में सेशन टाइम, एक शेड्यूल बना दिया. ठीक है, एक डेडलाइन है कि मुझे ये टाइम पे सेशन खत्म करना है, इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगा, ड्रामा प्रिपरेशन है, ड्रामा करना है. दीज थिंग्स आई हैव शेड्यूल्ड एंड केप्ट, तो उसके हिसाब से मैं इसको करूंगा, तो इसमें एक प्लान है. अभी प्रॉब्लम क्या है कि जनरली अनइम्पोर्टेंट थिंग्स जो है ना वो फर्स्ट जनरेशन में अनइम्पोर्टेंट थिंग्स हम लोग पहले कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स रह जाती है. बहुत बार ऐसे हो जाता है, एक्सपीरियंस किया है ना. लिस्ट बना कर रखेंगे, इंपॉर्टेंट थिंग को डिले कर देंगे लेजीनेस की वजह से, हम अनइम्पोर्टेंट थिंग पहले चले जाएंगे. सेकेंड जनरेशन में क्या है कि आप इंपॉर्टेंट थिंग को डेडलाइन सेट करके रखेंगे कि मुझे ये चीज इस टाइम को ही करना, इस टाइम के पहले मुझे खत्म करना है. आप लोग का क्या बोलते रिनाउंड एग्जाम्पल, आप लोग का असाइनमेंट जो देते हैं, असाइनमेंट दे दिया 1 week के लिए और मैं करूंगा एक दिन पहले जब आंसर्स मुझे मिलेंगे. हाँ, दिस इज व्हाट यू पीपल आर डूइंग. तो दीज मिस्टेक्स वी डू. जैसे कि कुछ और एग्जांपल, जैसे कि कुछ प्रोग्राम का प्लान कर, जैसे टुमारो वी हैविंग प्रीति वदन फेस्टिवल, तो दिस प्रोग्राम वाज प्लान्ड 3 months बिफोर. 3 months बिफोर जब पहले फेस्टिवल हुआ था उस टाइम को प्लान किया थी फर्स्ट में विल बी हॉलीडे, इट इज संडे, हॉलीडे फॉर वर्किंग डिवोटीज आल्सो, एवरीवन इज हॉलीडे, सो हम इस दिन ये प्रोग्राम वॉइस में करेंगे. सो पहले से प्लान किया गया था. फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया क्या मेन्यू रहेगा कुकिंग का, शेड्यूल क्या रहेगा, ड्रामा रहेगा, कीर्तन मेला, अलग अलग एक्टिविटीज रहेंगे, ट्रेनिंग सेशंस रहेगा. सो ऑल दिस थिंग वी प्लान्ड एंड केप्ट लॉन्ग बैक. सो दिस इज हाउ वी डू इन क्वाड्रेंट 2, है ना. प्लान करके एक्सिक्यूट करेंगे तो आपको उसमें क्या बोलते हैं इजीली स्मूथली आप उसको आगे ले जा पाएंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन second generation. This is what is the training you are getting in voice, how to plan the things and do step by step. Okay, so now coming to third generation time management. So this is something more, we go one step more deeper. Okay, so कोई और read कर सकते third generation time management? Anyone can read? The 3 generations of time management. Third generation, planning, prioritizing and controlling. Clarifying your values and priorities. Set long, medium, and short-range goals. Prioritize your activities on a daily basis, characterized by a wide variety of planners and organizers, electronic as well as paper, with detailed form of daily planning. Correct. तो देखिए इसमें फर्स्ट जनरेशन इज नो प्लान, जस्ट करते जाना है. सेकेंड जनरेशन में प्लान करके कर रहे, शेड्यूल किया, तो डेडलाइन सेट किया. तो थर्ड में आपके पास शेड्यूल डेडलाइन भी है, बट नाउ यू हैव प्रायोरिटी इन दैट. जैसे कि समझिए आप कुछ सर्विसेज कर रहे हैं, आपको लाइक 30-40 ईमेल्स आए हैं, उसको आपको रिप्लाई करना है. ठीक है, आज वो सब करना है, पर आपका अभी कल एग्जाम भी है. ओके, सो आपने शेड्यूल बनाया कि मैं सबको करके रिप्लाई करूंगा, बट एग्जाम भी है. सो व्हाट यू डू, यू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू एग्जाम. मैं पहले एग्जाम प्रिपेयर करूंगा, आज मैं 10 ईमेल्स आंसर करूंगा, and then I'll give my exam, prepare for exam tomorrow night, and remaining 30 I will give tomorrow. So in this way of prioritizing and doing it. Okay, so ये क्वेश्चन हम सब लोग पूछना चाहिए, am I prioritizing my activities or not every day? क्या मेरी एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी क्या है, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए. अब प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे then you will be haphazardly at the end of the day बहुत सारे एक्टिविटीज पेंडिंग हो जाएंगे, अब उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. समझ रहे. So this is very important aspect. बहुत सारे जगह में आप देख सकते हैं, जैसे कि in I used to stay in Mumbai, so like lot of local trains are there. It is like lifeline of Mumbai. When local trains are going, if some Rajdhani or some train is passing, they will make our train stop. पहले वो ट्रेन को प्रायोरिटी देंगे, है ना. सेम वे अगर पीएम यहाँ से जा रहे रास्ते सब कुछ स्टॉप कर देंगे, जितना भी हैवी ट्रैफिक रास्ता हो सब उसको स्टॉप करेंगे, पहले पीएम को जाने देंगे आगे, and then others will go. ओके, सो ये चाहिए क्या? ठीक है. सो these things we have to do, but often our mind, what our mind does, it will give, its nature is to give time to pleasurable activities. पहले जो मुझे अच्छा लगता है पहले मैं वो करूंगा, and then उसके वजह से vital activities will be set aside. जो activities मुझे important करनी है
वो मैं करता नहीं। तो ये चीज हमको इसमें ये बहुत करना चाहिए। अभी टाइम मैनेजमेंट का जो थर्ड जनरेशन है, इसमें क्या डिफेक्ट्स है या क्या प्रॉब्लम्स से फेस कर सकते हैं? यू ऑल कैन टेक अ गेस व्हाट प्रॉब्लम्स विल बी। लाइक फर्स्ट जनरेशन का मिस्टेक्स आपको पता चल गया, सेकंड जनरेशन का डिफेक्ट्स पता चल गया। ओके, someone else? क्या डिफेक्ट है थर्ड जनरेशन टाइम मैनेजमेंट में? एक चीज है कि हियर वी आर सेटिंग गोल्स कि मुझे ये चीज करनी है, गोल आफ्टर गोल। सो वी हैव समटाइम्स इट बिकम लाइक अ मशीन, ये गोल ये गोल ये गोल, जस्ट ये गोल करो फिर वो करो फिर वो करो। व्हाट हैपेंस, और ह्यूमन इंटरेक्शन बिकम्स लेस। ओके, जस्ट वर्क वर्क वर्क, ये करना, ये अकम्प्लिश किया, ठीक है नेक्स्ट। अभी ह्यूमन इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी डोंट गिव वैल्यू टू दैट, वी फोकस ऑन वर्क ओनली। तो दिस इज वर्कहॉलिक नेचर, इन आईटी कंपनीज वी कॉल इट। वही करते जाएंगे, नो टाइम फॉर फैमिली, नो टाइम फॉर पेरेंट्स, नो टाइम फॉर किड्स, नथिंग। वर्कहॉलिक नेचर, ये प्रोजेक्ट हो गया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, नेक्स्ट क्या करना है, दिस थिंग। ये प्रायोरिटी बना के रखा है, ऑल दोस थिंग्स का, उसको गोल सेट करके रखा है, अभी उसके पीछे चले गए, समझ रहे? तो दिस इज वन ऑफ द वेरी थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मीन्स वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ थर्ड जनरेशन टाइम मैनेजमेंट। एंड देन समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज शेड्यूल करके रखते हैं एक छोटे टाइम के अंदर, हमारा एक्टिविटी टू डू लिस्ट में, कि मैं ये सब चीजें करूंगा, बट टाइम इज लेस। टाइम लेस होता है एंड वी नॉट एबल टू डू दैट, देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, वो मैं कर नहीं पाया, वी गेट, अदरवाइज कुछ ऐड ऑफ एक्टिविटी आ गया, कुछ और सेवा आ गया बीच में, एंड इज अदर सर्विस कम्स, देन वो हमारी चीज नहीं हो पाया, देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। दिस इज दी व्हाट यू से defect of third generation time management. So now I will be coming to fourth generation time management, the final one. Okay, so fourth generation time management is a complete paradigm shift. Okay, ये तीन जनरेशन से टोटली अलग है, fully different. See, these problems are given over here. Can someone read this? कोई पढ़ सकता है? Anyone? आप भी पढ़ सकते हैं? हाँ? The efficacy focus creates expectations that clash with the opportunities to develop rich relationships, to meet human needs, and to enjoy spontaneous moments on a daily basis. Okay, point number B. B. The planners make people feel too scheduled, too restricted, and turns off people reverting to first or second generation techniques to preserve relationships spontaneously and quality of life. Yeah. So this is the problem of third generation time management. Okay. As we move from urgency to importance, we encounter the fundamental questions at hand. What are the first things, and how do we put them first in our lives? ये question हमको पूछना चाहिए. So now, fourth generation time management that can change the way हम लोग सोच रहे हैं. Okay. Can anyone guess what will be the fourth generation time management? क्या होगा? पहला वाला में प्लानिंग नहीं था, सेकेंड जनरेशन में प्लानिंग लगा दिया, थर्ड में उसको प्रायोरिटी लगा दिया, अब फोर्थ जनरेशन में क्या हो सकता है, क्या और बेहतर कर सकते हैं? निशान आपका लैपटॉप दे दो ना, आज हमको दे दो। Okay, not exactly. देखिए, fourth generation time management is really misnomer. The challenge is not to manage time, but to manage ourselves. ये सबसे बड़ा challenge है. Okay, so satisfaction is a function of expectation and realization. हाँ, start हो गया.
ओके, satisfaction is equal to function of expectations and realization. अगर आपने जो expect किया है, अगर आप वो कर पा रहे हैं, अगर आप कर पाए, then only you'll get satisfaction. Okay, aspiration satisfaction lie in the circle of influence. Okay, then देखिए next slide में क्या हूँ यहाँ पर. Fourth generation, rather than focusing on things and times, fourth generation expectations focus on preserving and enhancing relationships and on accomplishing results. In short, maintaining PPC balance. Okay, this is very important. Result चाहिए. Okay, आपने बहुत चीजें कर ली, प्रायोरिटी बना ली, सब कुछ कर लिया, और रिजल्ट नहीं आया तो क्या फायदा? आपने पूरा सी लैंग्वेज का बुक पढ़ लिया, एग्जाम में पर फेल हो गए तो प्रायोरिटी बनाया, मैं दोपहर को 2 घंटा सी प्रोग्रामिंग करूंगा, उसके बाद मैं ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ करूंगा, प्रायोरिटी बनाया, पूरा कर दिया, पर सी लैंग्वेज में ऐसा एक लड़का था, सब कुछ करने के बाद फिर सी में सप्ली लग गया उसको, इतना सब कुछ किया, तो ये किया, वीडियोस देखा, सौरभ शुक्ला के वीडियोस देखे, प्रोग्रामिंग किया, ऐसे फेल हो गया मैं. मतलब उन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडीज नहीं किया. रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडीज क्या, मैं बोला था एक बार आपको, डू रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडीज. इसमें बोला था मैं कैसे सेट करके करना, ऑर्गेनाइजर से करके, ऑल दो थिंग्स हाउ यू शुड डू. और वो नहीं किया तो बहुत चीज कर लेंगे, बट स्टिल यू विल फेल एट लास्ट एंड यू विल नॉट बी सैटिस्फाइड. सो दिस इज द मेन थिंग इन फोर्थ जनरेशन टाइम मैनेजमेंट. ऑनलाइन डिवोटीज आप लोग are able to understand? Yes, Prabhuji. Yeah, it is very important even in our studies also. Okay, so yeah, so just a simple example कि अगर आपके पास एक मुर्गी सोने का अंडा देती है तो उसका अच्छे से ख्याल रखो, you will get egg every day. Okay, सिंपल, ये चीज आप लोग को याद रखना है. ओके, वन ऑफ द वेरी वाइटल एग्जांपल, गोल्डन गूस का एग्जांपल. ओके, इफ यू टेक केयर ऑफ रिलेशनशिप्स एंड पीपल जिनके साथ आप रहते हैं, देन ऑटोमेटिकली योर थिंग्स विल बी डन क्विकली, वर्क डन विल बी इजी. जो थर्ड जनरेशन का डिफेक्ट था, ये इसमें ऑटोमेटिकली ओवरकम हो गया. आपका अगर रिलेशनशिप अच्छा है लोगों के साथ, समझिए आप जनरली जहाँ मैं काम करता IT कंपनीज में, जनरली यहाँ पर बहुत यूजफुल है रिलेशनशिप्स. अगर समझिए यू आर अ वेरी गुड प्रोग्रामर, ओके, एंड some other teammates are also there. They are not coming up to that mark standard, but they are very good in other aspects. Documentation अच्छे से कर सकते हैं, कोई कुछ algorithm अच्छे से कर सकता है, all those things they are able to do. You are a coder, they are algorithm, कोई documents अच्छे से कर सकता है, कोई other work कर सकता है. तो अगर आप अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखेंगे, then easily आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए तो करके देंगे. After you are done your code, you need to document it. Then you need to cross check with algorithm. You undergo some testing. कुछ टेस्टिंग की एक्टिविटीज रहेगा, वो आपको पास करना पड़ेगा. सो अगर टीम वर्क रहेगा तो आप इसको इजीली कर पाएंगे. बट अगर यू हैव वेरी ईगो विद यू कि नो, आई एम अ प्रोग्रामर, आई एम अ डेवलपर, तो मैं अच्छे से करूंगा, दैट्स ऑल आई हैव डन 200 लाइंस ऑफ कोडिंग टुडे, ये सब ऐसे करके, देन यू डोंट गिव मींस आप रिलेशनशिप को उतना अच्छे से नहीं रखेंगे विद योर कलीग्स at work or anyone, then when the time will come, you will also not get help. Okay, so relationship is very important. This is what matters over here. Okay, first generation, the difference is that things I have to do as much as things I can do. चेकलिस्ट में बना के लिख दिया, 10 चीज करना है, पर कुछ टाइम नहीं है उसके अंदर. सेकेंड जनरेशन का देन डिफेक्ट, सेम थिंग. थर्ड जनरेशन का अगेन डिफेक्ट. This is what is overcoming in this. ठीक है. So fourth generation में relationship and laptop, table. Okay. fourth generation में क्या है? Relationships and result. मुझे रिजल्ट के हिसाब से मुझे पढ़ाई करना है. ओके, सिंपल चीज में अगर बोलूंगा, मैं पहले कुछ स्टूडेंट्स को बोला था बात कि जैसे हमारे कॉलेज में वी हैड मैथ सब्जेक्ट टिल 7th सेमेस्टर CS में, ठीक है, फिर मैथ टिल 7th सेमेस्टर. सो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, अभी मुझे मैथ में अच्छा मार्क्स लेके आना है, इजीली स्कोरेबल सॉल्विंग.
समझा नहीं क्या? मतलब ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कैसे करें? गूगल मीट का लिंक सेंड कर दिया ना? कर दिया क्या? ठीक है, तो लिंक सेंड करके फिर उसको आप ज्वाइन करके वो लोग को ज्वाइन कराइए। सुपर कीपरों को पता है। So what we used to do is अभी मैथ में we had 16 मार्क्स क्वेश्चंस, ओके, 5 16 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा और 5 यूनिट्स है, माने कि 5 मॉड्यूल्स है। सो मैंने ऑर्गेनाइजर खोल के देख लिया पिछले 10 सालों क्वेश्चंस में क्या आ रहा है, सब देख लिया। तो मैंने देखा कि 5 जो क्वेश्चंस है 16 मार्क्स के, उसमें आइदर और ऑप्शन आएगा, आइदर और। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में 16 मार्क्स का ए बी रहेगा, सेकंड में अगेन ए बी, ऐसे पांचों में ए बी रहेगा। तो मैं एक चीज में ऑब्जर्व किया है कि जो पहला 3 क्वेश्चन है उसमें पहला 3 मॉड्यूल से आ रहा है आंसर, मतलब पहला क्वेश्चन में ए बी दोनों फर्स्ट मॉड्यूल से ही है। दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा था कि पहला मॉड्यूल में क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ए आ रहा है फर्स्ट मॉड्यूल से और बी का आ रहा है 5th मॉड्यूल से, समझ रहे? ऐसे पूरा मिक्सअप करके दिया था। सेकंड में अगेन 4th मॉड्यूल से 3rd मॉड्यूल से, मतलब मेरे को पूरा 5 मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा। पर मैथ में ऐसा नहीं था, फर्स्ट इसमें ओनली फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड इसमें सेकंड मॉड्यूल ओनली, उस टाइप का ये था। हाँ, तो नाउ व्हेन नाउ प्लेसमेंट्स आर कमिंग 7th सेमेस्टर में, तो उतना टाइम कौन वेस्ट करेगा उसको? आई हैव टू फोकस ऑन द प्लेसमेंट्स। तो आई जस्ट नीड टू क्लियर दैट सब्जेक्ट, दैट्स ऑल। आई जस्ट नीड टू क्लियर सब्जेक्ट विद गुड एवरेज मार्क्स मिलेगा तो आई कैन इजीली क्लियर दैट सब्जेक्ट। सो ये गोल करके इजीली पहला 3 मॉड्यूल पढ़ के क्या यू कैन इजीली पास दी, रिजल्ट आपको आ जाएगा बस। So in this way you have to first analyze the thing। वो भी चीज आपको छोटी छोटी चीज मिलेगी, अब वो बोला जाएगा ये काम करो, तो उसको पहले एनालाइज करो कि रिजल्ट क्या आएगा, सी द रिजल्ट एंड देन वर्क बैकवर्ड्स। ओके, रिजल्ट ऐसा आएगा तो मुझे ये स्टेप्स लेने हैं एंड देन यू डू इट। तो रिलेशनशिप्स एंड रिजल्ट, ये दो चीज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन रिजल्ट ओरिएंटेड टास्क। तो नाउ यू आर मेकिंग प्रायोरिटी ऑल्सो, यू आर मेकिंग शेड्यूल ऑल्सो, जो 3rd लेवल और 2nd लेवल टाइम जनरेशन में कर रहे हैं आप, टाइम मैनेजमेंट में कर रहे हैं, वो दोनों चीज आप कर रहे हैं। बट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स, रिजल्ट कैसा है मेरा, उसके हिसाब से आप करेंगे। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मोस्ट पीपल लैग अबाउट, वो ये चीज जानते नहीं है। मैं अभी तो बोला था आपको एग्जाम का कि जैसे गाड़ी में बैठ जा रहे हैं, बैटरी का सर पार करेंगे, मालूम नहीं कहां पे जाना है, नहीं वैसे नहीं। जैसे कि सिंपल देखिए कि अभी मेरे को समझे, अभी आई हैव टू गिव दिस क्लास, ओके, फर्स्ट सो नाउ first thing is that I will prepare this class for some time. Now for making the PPT of the class, इसमें दो चीजें RR, result and relationship. So now if I have good relationship with people, then I know okay this person knows this thing very well, कि उसको अच्छा क्वालिटी से फोटोज रहता है। So I'll tell him कि मुझे ये टाइप का फोटोज चाहिए, so आप ऐसे फोटोज मुझे दे दीजिएगा। 2 weeks पहले बोल दिया तो okay, very nicely he will do and give all those photos to me. This is relationship, मुझे हेल्प मिल गया। ओके, नाउ आई वांट रिजल्ट इन दैट। सो रिजल्ट मींस क्या है कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया, सब कुछ कर लिया, बट नाउ व्हेन आई एम देयर, आई एम सिटिंग इन द क्लास, आई एम नॉट इनवाइटेड पीपल प्रॉपर्ली, देन द रिजल्ट कम, नो, राइट? So I have to do a team work, okay, I have to make a team and I have to invite the people, okay, आप आइए, you come in this time, you attend the session, okay, this session में ये होगा, you have to explain them, ये हो, result क्या है, I have to reach as many students as possible, that it will help them, that is my result. If your life is help, आपके life में कुछ benefit हुआ, then that is the end result for me, okay, it is good for you, so I am satisfied कि आपके life में कुछ help हुआ है, that is the result. So अगर मैं किसी को इन्वाइट ही नहीं करूंगा बराबर से, बस बोल दिया ठीक है आ जाओ, क्या हो रहा है सेशन में, प्रोग्राम क्या, जो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, so they will not feel interested to come, they will not come. Okay, to see from the end point result ki okay, in today's session I should have at least 5 participants in this, that is my end result. 5 participants should be at least there who will get benefited from this. तो पहले वो करो and then you start preparing. समझ रहे? डाउट है क्या इसमें कुछ?
हाँ, सोशलाइज टू मच नहीं करना चाहिए. Okay, you should be friendly with everyone. Okay, but like every सबके साथ ही एक जैसे relationship you cannot make. You have relationship. हाँ, मतलब okay, not like too much. सबके साथ ही मिलेंगे आप. अगर बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना तो पूरे क्लास को इनवाइट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. Some are there who are your close friend circle. You can invite them like that. Okay, too much नहीं करना चाहिए. ठीक है. So this is the advantage of fourth generation relationship and result oriented. ये आपको अच्छे से करना चाहिए. Okay. Now coming to a next slide. This one I was speaking about golden goose example. अगर ये करेंगे तो आपका ग्राफ प्रोडक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ता जाएगा. प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट कैपेबिलिटी, ये सब एक्चुअली जनरली क्या बोलते हैं हम लोग को वर्किंग लाइफ में सिखाया जाता है. ऑल दिस थिंग्स, हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, बट इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू आल्सो. एंड दिस प्रोडक्ट, हाँ, सी दिस सेम थिंग कि आपको आप क्या बोलते हैं, आपको सेम चीज, आपके जो हैन है गोल्डन गूज, उसको आपको टेक केयर करना है. मीन्स आपका रिलेशनशिप अगर अच्छे से रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प मिलते जाएगा. ओके. फिजिकल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, ह्यूमन एसेट्स, all the different assets are there which we have to take care in this. And then we need to introspection. इसको ना डोर को बस बंद कर दे, बार बार नॉक होगा. Maybe it will rain now. So कपड़े ऊपर, आप आपके दोस्त को फोन करो ना. हाँ गया. सर एक WBG का लड़का दोस्त था, समझे, वो आया था एग्जाम देने के लिए. 4 बजे एग्जाम खत्म हुआ लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं. चेक करो एक बार. This is very important thing now, introspection. So can anyone read this activity? Introspection slide. Read कर सकते हैं. What is the one activity that you know, if you did superbly well and consistently, would have significant positive results in your 1. personal life, 2. professional or work life? Okay. So देखिए, we have to introspect on what things. हाँ, इसको लॉक कर दो. ये ठीक है, छोड़ दो. इसको बस दरवाजे को लॉक कर दो. So it is actually raining, about to rain very heavily maybe, or rain has started here. Lot of strong winds are blowing. Okay, that's why some disturbance. And anyway, let's come back to our topic. So introspection. Slideshow, क्या? आ गया वो, उसका ट्रेन पे था. एक मिनट, I am doing the slideshow. Yes. Is it visible now to everyone? Okay. So introspection मतलब क्या? Generally देखिए, we have to look what things हमारे लाइफ में हम लोगों ने नहीं कर पाए, जो सेट रिजल्ट सेट किया था, गोल सेट किया, नहीं कर पाए. ओके. जनरली वॉइस में इसका ये रहता है, वी कॉल इट स्मार्ट कार्ड और साधना कार्ड. ये स्टैंडर्ड उसी के लिए बनाया गया है, दैट टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ. एवरी मंथ में देयर आर 2 एकादशीज कमिंग. कृष्णा's favorite day, एकादशी. So every one ekadashi comes every 15 days. It's almost 2 weeks. So every 2 weeks you look back at your life. कि मैं 2 weeks में मैंने ये results मुझे achieve करने थे, ये चीजें मुझे करनी थी. So how much more I have come towards that? समझ रहे?
this is how we follow invoice. That is why sadhana card is given. A percentage बनवाना पड़ता है. Some of you don't do the percentage also. Okay, percentage बनाने से you will come to know. Percentage बनाने से you will come to know कि okay, this activity में मैं इतना lagging था. I was sleeping late at night. My percentage was less now, so I have to improve this thing. So introspecting yourself. Okay, this is very important. One of the very important thing. Okay, a few common answers given by thousands of successful people. Taking better care of self, improving communication with people. This is very important thing. Communication, you should be communicating. You should not be like introvert person, always sitting alone and not means speaking with people, or you should not be too much like extroverts. You should be in a average level. Okay, then delegation and empowerment. Okay, so now those activities, now जैसे कि if you're having some like if you're a team manager or if you're a team leader, then those activities which can be easily, इसको lock कर दो ना, otherwise it will keep on banging. Those activities which can be easily done, you can delegate those activities to other people. Okay, better planning and organizing, seizing new opportunities, preventive maintenance. So all these things we have to do. We have to remember this train, educate, empower, engage and empower formula. T-triple-E formula. T-triple-E formula मतलब क्या? First train. Okay. पहले आप train कीजिएगा. We have got some people. You train those people. Then you educate those people. How do you train them? By educating. Give them education. Okay. After education देने के बाद, then you engage them. उसको बंद कर दो. Okay, T-triple-E formula याद रखो. Okay, train, educate, engage, and then empower. Once you educate them, then you can engage them in different activities. Okay, and then you empower them to go and then educate others. Okay, this is how you make leaders. This is very important for T-triple-E formula. You can note it down. Okay, and only quadrant 2 में जो लोग रहते हैं, they can only take advantage of this T-triple-E formula. Quadrant 1, 3, 4, nothing will happen. They won't even come an inch near to this. So as we go more deeper into this, so quadrant 1 will get shrinking and quadrant 2 will get in more picture. Effective time management lies in spending considerable time in quadrant 2 activities. They are important but not urgent. Okay, result oriented, what I was speaking about just few minutes back. Quadrant 1 got shrunk and quadrant 2 is the major now. Vision, balance, discipline, control, and there will be some few crises, ad hoc activities which you need to take care. Okay. Now I will share some other slide with you. I have very less time left with me. 10 minutes are only there. So there's one more slide I wanted to share. This is also very interesting one. Yes, this one. मेरा स्क्रीन देख पा रहे आप लोग? Visible, right? Yeah. So देखिए यहाँ पर there is a gross body, there is subtle body, and there is soul. Okay, so actually who are we? हम लोग कौन हैं? आप क्या बोलते हैं? हम लोग कौन हैं? आपका नाम आशीष? नीतीश. Okay, नीतीश. So if I say who are you, आप क्या बोलेंगे? नीतीश. Okay, but who is Nitish? Okay, so basic भगवद गीता का सबसे फर्स्ट मीन्स नॉलेज जो समझ में आना चाहिए, जो बोला जाता है दैट वी आर नॉट दिस बॉडीज, वी आर सोल्स. ओके, व्हेन यू आर अ स्मॉल बॉय, आप उस टाइम को भी नीतीश ही थे. अब जो बॉडी उस टाइम को थी, क्या बॉडी अभी है आपके पास? नहीं, बॉडी चेंज हो गया. मतलब आप भी चेंज होना चाहिए, पर आप तो वही इंसान है ना, चेंज नहीं हुए.
So you are a soul. After 20 years, your body will become little old, but you will not change. And after some time, you have to, body will dwindle and it will fail. जैसे जैसे कपड़ा फट गया आप निकाल के नया शर्ट पहन लेते, वैसे you will get a new body, a new birth, but you will be the same person. Okay, this is what we have to understand. So our gross body is made up of earth, water, fire, air and ether. ठीक है, सबसे पहला मतलब this is our gross body, which is physically visible to all of us. Okay, एक मिनट, जो online devotees है, okay, yeah. This is a gross body, and subtle body is made of 3 more elements: mind, intelligence, and ego. This you cannot see. इसे आप देख नहीं पाएंगे. मान लीजिए अगर कोई भी सोया रहता है, वो सपना जो देखता है उसमें उसका बॉडी जो सपना देखता है, it is on subtle body level, मतलब it is on mental level. This mind, intelligence, ego, इसके ऊपर. जैसे सिंपल अगर मैं आपको बोलूँगा कैसे, जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, ओके, नाउ is an Android mobile phone, okay. So now this is a hardware. These have some RAM, 8 GB RAM, some battery is there, कुछ processor है, all these things. And now Android is a software. So which Android is there in the market now? Latest version? 12. Android 12 चल रहा है अभी, है ना? So now अब मेरा hardware है, इसके अंदर मैंने Android 12 is a like software, okay. Now similarly this whole thing is like a gross body, समझ लो इसको. आप इस फिजिकली इसको फील कर सकते हैं, ठीक है. एंड सॉफ्टवेयर जो है दैट इज सटल बॉडी, दैट इज सटल बॉडी, ओके. नाउ जो सटल बॉडी है वो क्या हो गया, वो सब एप्स हो गया ना आपका, जनरली क्या, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑल दिस. वो लैपटॉप में लिंक क्रिएट कर दिया मेट से, लेकिन उसका लिंक शेयर कैसे करूं, मतलब मैंने चैट में डाला ये लिंक है, वो इसको कॉपी कर दिया ना, इसको कॉपी करो लिंक को. कोई नहीं है क्या वहाँ पर, और कोई गोविंद को पता होगा, देखिए उनसे पूछ सकते हैं. तो बोलो मुझे लिंक सेंड करना, इसको लिंक सेंड करना है बस व्हाट्सएप में. ओके, सो कमिंग बैक, सो नाउ वी हैव फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑल these apps, okay, in our mobile phone now, but these apps are as a subtle body. इसको इमेजिन करो आप, एनालॉजी, and then the hardware is the gross body. Now, how does the soul come into picture? Soul is यहाँ पर लिखा है eternity, knowledge and bliss. So soul आप consider कीजिए is the base software, the system software, which is called as Android. Okay. Now, अगर आपका जो applications है, समझिए फोन अभी 3 साल पुराना हो गया, ठीक है, 3 years old phone. हार्डवेयर तो वैसे ही है, हार्डवेयर में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, रैम और सब चल रहा है, okay. Now what will happen is the apps will keep on updating. Facebook, all these apps will keep on updating. Apps update हो रहा है. Okay, you are updating your intelligence. You are doing nice yoga. आपने योगा किया, आपने अपना हेल्थ मेंटेन किया है प्राणायाम के थ्रू, आपका इंटेलिजेंस IQ लेवल बढ़ा है, अच्छे से आपने पढ़ाई किया, you have gained something. Okay, but if a base सॉफ्टवेयर को अगर आपने अपडेट नहीं किया, अगर एंड्रॉइड आपका एंड्रॉइड 12 में ही है, तो करंटली मार्केट में आया है एंड्रॉइड 15, so the apps will also become slow. Yes or no? ये सब लोगों को समझ में, एग्जांपल जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये एप्स विल बिकम, तो डजंट मैटर आपने कितना भी लाइफ में सक्सेसफुल आप क्यों नहीं बन गए, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग यू हैव गॉट, हाउस, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग इज देयर, अपग्रेड योरसेल्फ, ऑल द एप्स, पर अगर आपने सोल को अपग्रेड नहीं किया, यू हैव नॉट गिवन फूड टू योर सोल, देन एवरीथिंग इज फेल. ओके, सो दैट इज व्हाट इज very important, and this what will be the food for our soul, that is what is given in Bhagavad Gita. Many times we chant this Hare Krishna Mahamantra, mantra meditation. This is one of the food for our soul. That many other things are there which will be coming in future sessions. Okay, so this is what you have. So unless you have Krishna or God in your life, okay, then no matter whatever you do, you will not be satisfied. Like sir, this Android, if soul gets upgraded, so is there any downfall or it will be at the same level? See, now assume that soul gets upgraded means अभी now आपने भक्ति start किया है, my phone is connected here. आपको लिंक को शेयर कर दी, मैंने सेल्फ मैनेजमेंट दे दिया, नॉट दिस वन, हाँ यही ना, मेरा भी मैंने भेजा अभी, this one, यस, हाँ ये वाला
सेल्फ मैनेजर बैच वो 2 में दिया कि 1 में दिया है? 2 में दिया सीनियर ठीक है, सेंड कर दिया. ओके, सो नाउ भागवत गीता में क्वेश्चन पूछा था. ओके, तो इसका आंसर में कृष्ण भगवान क्या बोले कि सोल का डेफिनेशन क्या है. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर सोल के बारे में. येलो कलर का जो है उसको यहाँ क्या लिखा है उसके बारे में. क्या? सो एटर्निटी, नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस. सो इट इज इटर्नल. उसका कभी डेथ नहीं हो सकता. सोल का साइज क्या है पता है? आप अपने सिर आपके बाल को लेके उसको 10,000 टाइम्स कट करो. एक बाल को 10,000 टाइम्स कट करो तो वो जो 1/10,000th पार्ट है, दैट इज साइज ऑफ सोल. That is the size of your soul. That is the size of your soul. No microscope can see it. आपके सिर का बाल का कितना है उसका, आपका बाल का टिप जो होता है ना, उसको 10,000 टाइम्स कट करो, and that will be the thickness को 10,000 टाइम्स. हाँ. You cannot see. Yeah, you cannot see with any microscope. You cannot burn the soul. You cannot cut the soul. You cannot destroy the soul. It is eternal. Okay, because it is part of God. It is a part of Krishna. So now what will happen is Krishna भगवान बोले कि if someone अगर आप एक सोल को अपग्रेड करे, मीन्स अभी आपने भागवत गीता पढ़े हैं, आपने कुछ सेशन सुने हैं. ओके, some things you are reading Gita every day, like these things happen. Now you have तो जितना भी आप कर रहे हैं, it is going into your spiritual credit. Okay, it's in a spiritual currency. Now unfortunately somehow or the other your death happens. So this spiritual credit, because you are the same person, Nitish. So this body has gone, okay, but you have not gone. You are the same person. So when you get a new body, जितना credit आपके पास था, means you have just done 17% of upgradation of your soul. So you will start from 17. Yeah, will be from 18 now. But the body which you will get, that will be starting from again 0. Okay. Now Steve Jobs has gone. Next life he got another body. He can't say I was Steve Jobs, Apple CEO. He has to start with ABCD. Again he has to do. But what spiritual credit is that will be there from the same level. It will go on. And when the soul will become 100% upgraded, then he will not get this material body again. He will get a spiritual body, which is eternal. Okay. So these things are little more deeper science, Vedas. So this will come in future sessions. Very interesting. How creation happened, all these things happened will be coming. So coming back to our topic of time management again, we were a little bit out tracked over here. So next slide में देखिए यहाँ पर innate qualities and acquired qualities. Okay, so just like I said, soul is eternal and soul is a part of God. Soul has all good qualities: compassion होना, loyalty, humility, है ना? See, any person जिस इंसान में quality रहेगी, we naturally get attracted to that person, right? किसी भी इंसान में लॉयल्टी है, ह्यूमिलिटी है, फेथफुल है, we all feel that is a good person. These are the qualities of soul. But acquired qualities मतलब क्या? Those qualities which we have developed from others. मैं किसी दोस्त के साथ गया पर he has a thing of smoking. So slowly that thing comes over us also. This quality we have acquired, bad quality. Yes, others online you are able to understand, you are able to see the slides. Yes, Prabhuji. Okay. Just one example I say in many classes I said this thing. You all know hogs, right? Hogs मतलब क्या? हाँ, सुअर, pig. So pig क्या करता है? मिट्टी को खाता है. हाँ, वो क्या करता है? गटर में स्विमिंग करेगा अच्छे से, गंदे जगहों में, स्टूल खाएगा, गंदा चीज खाएगा, है ना? वेरी डर्टी. सो हमारे जो एरिया है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज सराउंडिंग एरिया, तो क्या आपने यहाँ पर हॉक्स को देखा है? कभी हॉक्स को देखा है यहाँ पर? नहीं, इस एरिया में देखा तो नहीं देखा. आपने देखा? कचरा तो आता है. निशांत को देखा हॉक्स को?
अब आपको देखा है आदमी को बोलना है क्या मतलब हाँ बहुत सारे हॉक्स है ना इतने सारे ह्यूमन बींग्स है वही कर रहे क्या कर रहे मोबाइल में गंदा चीज देखते हैं गंदा चीज खाते हैं illicit relationship with other girls and all those things hog activities समझ रहे so if you are able to see these hog activities means you have the specs of scriptures आप लोग का specs है so you should see the world through specs of scriptures शास्त्रों के चश्मे से दुनिया को देखेंगे then you will see the reality of the world तो आपको लगा सब नॉर्मल ही है he is going with girlfriend and doing some wrong thing I can also do such things before marriage wrong thing वो किसी को चोरी किया कुछ सिगरेट पिया स्मोकिंग किया इट इज नॉर्मल ना सब लोग कर रहे हैं आजू बाजू में तो नॉर्मल हो गया मैं भी कर सकता हूँ दिस इज व्हाट इज हॉग लाइफस्टाइल सुअर का लाइफस्टाइल एक फिल्म आया था बहुत साल पहले शाहरुख खान का बादशाह नाम का राइट सम स्पेक्स वेयर इन दैट अगर आप वो पहनेंगे तो यू विल सी अंदर क्या है दिस इज हाउ द स्क्रिप्चर्स विल एक्चुअली टेल यू टू सी द रियलिटी अंदर रियलिटी क्या है okay so this is very important so this is the acquired qualities which we get अगर अभी जो बारिश हो रही है बाहर the water is very distilled water rain water pure like distilled water but when the water comes on the ground अगर वो डेक्कन एरिया में महाराष्ट्र हैदराबाद वहां पर गिरेगा there is a red color sand over there तो पानी का कलर ऐसा हो जाएगा if it falls from other where black sand is there it will take that color similarly we are pure all of us are born pure okay but by the association which we have we'll acquire that kind of qualities okay so this is one of the very important aspect that's why these centers are created near some of the colleges so that at least those who are interested they can save their lives instead of being hoggish life they can lead a good meaningful life ओके यहाँ पर देखिए स्लाइड में आप देख सकते हैं एक्वायर्ड बैड क्वालिटीज पोस्टपोनिंग वन ऑफ द वेरी एक्वायर्ड बैड क्वालिटीज स्टडी करेंगे लास्ट मोमेंट में स्टडी करेंगे आपका असाइनमेंट लास्ट एक दिन पहले असाइनमेंट करेंगे पोस्टपोनिंग मूड ऑफ ऐसे ही लड़का बैठा है आसमान को देखते बैठा है क्या हुआ मूड ऑफ हो गया क्या करेंगे ऐसा ऐसा कुछ हो गया तो मूड ऑफ हो गया चांद इतना बड़ा दिख रहा है आज क्या करे ऐसे देखते बैठे मूड ऑफ और इजीली इरिटेटेड आज के जमाने का बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे कुछ ही बात किया मम्मी डैडी कुछ बोले कि इरिटेट हो जाएंगे दिस आर द एक्वायर्ड दैट इज नॉट अवर एक्चुअल क्वालिटी हम क्वालिटी खुद में लेके आए हैं एसोसिएशन के वजह से ये चीज देखिए इनएबिलिटी मतलब क्या नॉट अ टीम प्लेयर इज नॉट मतलब नॉट एबल टू बी इन अ गुड टीम किसी के साथ जमता नहीं बोलते ना इस लड़की से जमता नहीं हर टाइम कर नॉट अ टीम प्लेयर दिस अगेन अ बैड क्वालिटी लॉयल्टी like loyalty one of the very very important good quality which is not there in today's world बहुत कम लोग में quality मिलता है just हमारे company में ही what happened many years back one of manager was saying this thing कि there is an R&D department research and development department okay so that is ये department को बहुत ही मतलब qualified लोग इसमें लोग select करते हैं who are very qualified in education very intelligently they can think so they wanted to go into automation okay because current system is cloud and automation उसमें उनको जाना था हर चीज को ऑटोमेटिक करना ऑटोमेशन मतलब क्या चीज को ऑटोमेटिक करना मैं अगर एक बटन दबाऊंगा तो सब प्रोसेस ऑटोमेटिकली होते जाएगा उसके बाद मुझे मैनुअली करने की जरूरत नहीं है so they're researching on that but they're researching but before they launch their service or the product the other company is able to do that वो करने के पहले कोई और कंपनी कर रहा है उसको 2-3 बार ऐसे होते हैं शॉक कि हम लोग रिजल्ट पे आने के पहले किसी और कंपनी ने वो पब्लिश भी कर दिया पेटेंट बना दिया उसका हो गया हाउ इज पॉसिबल ऑल दिस थिंग देन दे फाउंड आउट द मोल दैट देयर इज दिस पर्सन हु इज सेलिंग ऑल दिस थिंग्स टू एंड दे ब्लैकलिस्टेड हिम उसको निकाल दिया एंड व्हेन ही वेंट टू द अदर कंपनीज को सेल कर रहा था वो कंपनी भी लिया नहीं उसको बिकॉज़ ही डिड चीटिंग ओवर देयर सो ही शुड डू चीटिंग ओवर हियर आल्सो See how means loyalty कितना important है पहले आपसे चीटिंग करा के सब कुछ ले लेंगे and then when you go there आपको लात मार देंगे so loyalty is very important yes and then bad mouthing in our मैंने ये literally देखा है in our when we third year के end में था तो हमारा placements हुआ था ठीक है so we had like
40 to 45 क्यूबिकल्स था. एक टाइम में उतना लोग का प्लेसमेंट होता था, एक टाइम में उतना इंटरेस्ट होता था एट अ टाइम. स्मॉल क्यूबिकल्स, स्मॉल कैबिन्स काइंड ऑफ. सो हाँ, इंटरव्यू कैबिन्स हमारे कॉलेज प्लेसमेंट सेल में. So it was going on, and then after interview we had some lunch break. Okay, lunch break tha, and then these two boys were there. They did very well in the interview, and they're gossiping and walking, and बोल रहे कि जो इंटरव्यूअर था ना मेरा, उससे अच्छा कोडिंग तो मैं कर सकता हूँ. तो क्वेश्चन करता मैं ऐसे आंसर दे रहा था उसको, कुछ उसको आता ही नहीं होगा. And unfortunately that person was just talking behind them. इसने इंटरव्यू लिया, समझ रहे? Bad mouthing, है ना? Just bad mouth, that's all. So these are the major acquired bad qualities that all of us should be. This grave qualities, serious, simple, इसको categorize किया गया है. और भी कुछ है, मैंने तो बस important ये लिया है. So we are almost over in our time. So next things, there is some other interesting things I will discuss in next session. ठीक है, तो आप लोग टाइम पे आ जाओ. एटलीस्ट 6 बजे आओगे तो मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा इसको. हाँ, तो I will conclude the session in next session. Okay, those are online. So any questions you have so far? कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. आज हमने डिस्कस किया 4 क्वाड्रेंट्स को डिस्कस किया है, फिर 4 जनरेशन टाइम मैनेजमेंट, and then body soul ka difference and acquired qualities and all those things we have discussed. So isme kuch doubts, anyone? Kya? Inability in team playing. मतलब टीम प्लेइंग, टीम वर्क होता है ना. आप फुटबॉल का मैच तब जीत पाओगे जब सब लोग एक साथ टीम कैसे खेलेंगे. अगर उसको ईगो है कि नहीं, यू हैव सीन दैट मूवी राइट, चकले इंडिया, ऑल दोस थिंग्स, कि मुझे ही गोल करना है, इफ आई वांट टू डू मोर गोल्स, नॉट बॉदरिंग अबाउट टीम, देन वी लूज. अब हार जाएंगे, पूरा टीम हार जाएगा. सो वी हैव टू बी इन अ टीम प्लेइंग स्पिरिट. ये आजकल के जमाने में, इन टुडेज लाइफस्टाइल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैविंग दिस क्वालिटी, बैड क्वालिटी, नॉट अ टीम प्लेयर. ओके, मतलब खुद के बारे में सोचना ज्यादा, सेल्फिशनेस, ईगोइस्टिक. मैंने इतना किया, फिर मेरे को ऐसे किया उसने, एंड देन बैड माउथिंग करके आगे पीछे बोल देना, ग्रुपिज्म करना, अलग अलग, दिस थिंग. तो दिस थिंग वी शुड नॉट डू. ठीक है, तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे. और कोई क्वेश्चंस ऑनलाइन जो है? हाँ, कभी हम देखते हैं जब हम लोग सबके साथ अपना अच्छा जो रिलेशन है वो मेंटेन करना चाहते हैं, तो उस वजह से हम लोग जब बात करने लगते हैं तो ज्यादा बात हो गया तो हमारा जो डेली एक्टिविटीज है वो तो पूरा नहीं हो पाएगा. तो इससे समझ में हमको क्या करना चाहिए? ओके, मतलब आप सब लोग वही तो बोला ना, दैट इज कॉल्ड टू मच सोशलाइजिंग. ओके, टू मच सोशलाइजिंग नहीं करना है हम लोग को. अब हाँ, अब you are there good with everyone, but not too much socializing. That's what I'm saying. Come to result orientation. Okay, मेरा सेमेस्टर अभी है, after next semester may be offline. Okay, so मेरे को उसके हिसाब से पढ़ाई करना है. तो उसके हिसाब से okay, there are some boys who are doing well in the studies, genuinely पढ़ाई करते हैं, they are like kind of toppers. So I'll have some good relationship with them. If I want to socialize with them, there are others also who are doing some other activities, but they're good, friendly people. It's okay, we are friends with them. But spend some time with the toppers so that you can also get that association. You can also do like that, but not taking the bad qualities from them. ये भी आपको देखना पड़ेगा. ठीक है? Any other question? ऑनलाइन में जो है साक्षी माता जी, कृतिका माता जी, प्रायोरिटाइज कर देते वर्क को, लेकिन वो कोई 40% 60% नहीं अटक जाता है वो एंड ऑफ द डे. मतलब वो इसलिए पता चलो प्रायोरिटाइज तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी ओके, एनर्जी रहता है कि हाँ अब तो करेंगे, लेकिन बाय चांस क्योंकि एक दिन होता तो समझ आता, बाय चांस ये किसी ना किसी तरह टाइम चला जाता है. टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, टाइम चला जाता है. करेक्ट. तो अब आपको, हाँ करेक्ट आपने बोला, दिस हैपेंस.
because we are not focusing on result orientation, we are again focusing on prioritizing. Result orientation के हिसाब से आपको करना है. And there is one more I'll say in next session. There is one more thing called ad hoc. Okay, you have done your everything. Result के हिसाब से आपने अपना बना के रखा है goals, but कुछ ad hoc चीज अंदर आ गया. So how do you deal with that? अभी ad hoc ये तो प्लान में नहीं था, मैं रिजल्ट में अफेक्ट करेगा तो मैं कैसे डील करूंगा? This I will be telling next session. Okay, this is also very interesting way. ठीक है? हमने तो उसी परिवेश में है, लेकिन उसमें से कैसे निकल सकते हैं? मतलब That's what you have to wear the कैसे निकल सकते हैं आपस में जो लोग खराब बुरा काम कर रहे हैं उन लोगों से हम लोग बातें नहीं करेंगे, स्कूल में उन लोगों से नहीं मिलेंगे, तो उन लोगों से इरिटेशन आ जाएगा. नहीं वैसे see that is not what you have to do. मैंने क्या बोला कि you see from the scriptures के इससे आपको चश्मे से देखना है. Okay, now you know that that person is smoking. बोलते हैं मुझे कंपनी दो, मैं जा रहा हूँ, दोस्त है बार में, आप मत पियो बस कंपनी देने को आ जाओ. Most of the friends say like that. Okay, एक कंपनी हमारे ऑफिस में ऐसे होता है. So you don't you have to speak in such a way that you don't harm your relationship also. At the same time आप आपका रिलेशनशिप को हार्म नहीं करेंगे, आपका रिलेशनशिप बना रहेगा. At the same time आप भी उससे बच जाएंगे. ओके, ये सिंपल महात्मा ने बहुत बार क्लास में बोला था. अभी समझिए आपका कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड आपने प्लान बना के रखा है, बट यू हैव योर सम गुड फ्रेंड्स, ओके, हु आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, वेरी नाइस, बट नाउ दे हैव मेड अ प्लान, सम मूवी हैज कम, दे आर गोइंग देयर, नाउ यू डोंट वांट टू गो देयर. तो आप क्या रीजन बोलेंगे कि उसको हर्ट भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए? क्या बोलेंगे बताओ? रिलेशनशिप चला गया साइलेंसर बना देगा आपको. सिंपल बोल दो. मूवी तो बहुत अच्छा है, मैंने पहले देख लिया है. इस बार मैं सिंपल बोल दी. देखो कल रात में बहुत ज्यादा पार्टी कुछ खा लिया था, सुबह से लूज मोशन हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रहा यार, माफ कर दे, अगले बार हो रहूंगा बस. सिंपल से सम रीजन विच ही विल आल्सो, उसको बुरा नहीं लगेगा और आपका भी काम हो जाएगा. मेरा पढ़ाई करना है, कुछ काम आ गया, मींस रिलेशनशिप अगेन गेटिंग डाउन. ओके, दिस इज योर इंटेलिजेंटली थिंक कैन डू इट. समझ रहे? यू नो द रियलिटी नाउ दैट चश्मा पहन ले शास्त्रों का कि मैं वो करूंगा, 3 घंटे वेस्ट करके 250 रुपए वेस्ट करके मुझे क्या मिलेगा वहां पर? टाइम वेस्ट होगा. उससे अच्छा मेरा प्लेसमेंट आ रहा है, मैं इसे फोकस करूंगा. व्हाई वुड आई वेस्ट माय टाइम ओवर देयर? 3 घंटे में आई कैन डू सम नाइस एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, कुछ थोड़ा प्रोग्रामिंग कर लूंगा, 3-4 प्रोग्राम्स आई विल मेक नाइसली. सो यू हैव अ प्रायोरिटी टू डू लाइक दैट. ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? ऑनलाइन आप लोग क्वेश्चन हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु जी ये एक क्वेश्चन है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ज़्यादा काम हो जाता है, मतलब एकदम मोनोटोनस एक मशीन जैसा, और काम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा हो जाता है बट वही रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता, तो हाउ टू कीप अ चेक ऑन दीज टू थिंग्स, लाइक नॉट वर्किंग टू मच इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड ऑल्सो बीइंग रिजल्ट ओरिएंटेड? Okay. Result oriented, so you have to prioritize your third quadrant based on your result. Okay, result oriented thing. जैसे कि you have to like set some limits in your work also. Now assume that I have to do this activity and I have allotted some time for that कि मुझे इस activity complete करना है around in 1.5 hour time. Okay, now after that next half hour I have some relatives coming, so I have to spend some time with relatives also. Okay, now what happens is वो activity आप कर रहे हैं and you have got so much interest in the activity कि आप बाहर नहीं आना चाहते हो. ठीक है, वो आ गए ऑलरेडी मिल सकते, फिर से रिलेटिव आएंगे. This thought and this thought you have to cut it down. No, Yes. But this time doesn't matter. मैंने वो सेंटर आ रहा है, पूरा हुआ नहीं, but doesn't matter. But I have to give time there also. And again I'll come back and do it. So you have to make your relationships also and result पे भी आपको focus करना है. ठीक है? So you have to like set some limits. You should know your limits.
I can do this activity maybe in this much time. You have to give some buffer time. Buffer, okay. जैसे कि आपने शेड्यूल बनाया है, डे का शेड्यूल बनाया है कि मैं 1.5 आवर में मैथ का पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मैं हाफ एन आवर के लिए आई विल वॉश माई क्लोथ्स एंड डू समथिंग एंड अगेन आई विल स्टार्ट फिजिक्स का पढ़ाई करूंगा, फिजिक्स का, ठीक है, आपने ऐसा करके लगा. So don't just keep 1.5 hour because you are thinking that 1.5 hour में मैं ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लूंगा. That is your thinking, your capacity. But anything can happen in that time. So keep a buffer, keep 20 minutes extra. Okay, 1 hour, 50 minutes रख दो. तो कुछ और चीज भी आएगा so that thing will not get affected. समझ गए? तो बफर के साथ रिजल्ट भी हो जाएगा और अपने रिलेशनशिप भी जो लोगों के साथ रहेगा that also will be good. Okay, Prabhuji. Yes, others? If no question, then we'll wind up today's session. Okay. So next session, I'll conclude this topic